हम रशियन से एनर्जी सप्लाईज लेते रहे हैं, यूरोप भी लेता रहा है, हम भी पैसा देके लेते रहे हैं। आपने भी लेटली अभी 3-4 दिन पहले कोशिश की थी, बट उन्होंने आपको देने से मना कर दिया, तो वो तो हमारा कसूर तो नहीं है ना। तो अगर वो आपको डिस्काउंट पे कुछ नहीं देना हमारे पास चाहते, तो पैसे ही नहीं है मैडम, सीधी सी बात नहीं, करनी आपने भी चाहिए। डिस्काउंट पे मांगा था। आपके जो हमारे पास तो पैसे नहीं है, सीधी सी जो बात है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया का हवाला दे रहे थे कि अगर इंडिया को इतने डिस्काउंट पे रशियंस ने तेल दिया है तो हम भी ले सकते हैं। उन्होंने 30-40% डिस्काउंट पे मांगा था। तो द मॉस्को द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन मॉस्को दे सेंड देम बैक। उन्होंने बोला कि सॉरी, ये नहीं हो सकता अभी। तो ये तो हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर आपको लोग वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जो वो इंडिया को दे रहे हैं। जी एंड जी, जी, and I have no qualms to accept it कि Russians have been one of our, allies, and they still continue to be an ally. In fact, right now they're having a festival in New Delhi, and we are, heading the G20 right now. और आपको पता है that India has to literally walk a diplomatic tightrope here, to navigate its interests. And आपको पता है G20 में again there are like so many countries which have their own vested interests, but आप देख लें, we are somewhere able to have good relationship with everybody, and have our allies understand us. हमारी Palestine पे भी एक position है, and the Israelis understand it. So you got to give it to India for that, okay? The Israelis know that, okay, aapki ye position hai, they are still our friends. The Americans know that we are buying oil from the Russians, they are still our friends. And you got to maybe learn a thing or two from us, instead of नहीं नहीं, being बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। all the time and, be so grumpy, and, that's not how you do it. नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो ये समझता हूँ सीखना चाहिए इंडिया से बहुत। देखिए, जो चीज़ जी, अच्छी, जो चीज़ किसी में भी अच्छी हो सीखनी चाहिए, इसमें कोई तंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे इंडिया की ये बात अच्छी लगी कि चाइना के साथ मिसाइल भी है लेकिन कारोबार भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, यही होना आगे भी चाहिए। होगा, जी, आगे भी होगा, वो नहीं होता नहीं, ही मुझे पता रहेगा। है, वो मुझे पता है, वो चाइना ने जो भी आपके साथ किया कारोबार करेंगे आप। लेकिन ये है हमने कि भी मुझे उनके साथ बहुत कुछ किया, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ अकेले कुछ नहीं किया, हमने भी उनके साथ बहुत कुछ किया है। बट वो थोड़े जस्ट डिस्टेंस है। बट अभी आपको पता होगा ना वहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो आप अपना भी ध्यान रखें थोड़ा। नहीं, हमारे तो देखिए मैडम, हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं और वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे वो सॉल्व करने हैं। हम आपके एक बार मसाइल भी बहुत है, बट आपके पास ना ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा है। देखिए मैडम, ओपिनियन फ्री स्पीच है। वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेसी है, फ्री। हम भी सो कॉल्ड जैसी भी है ऐसी हैं, डेमोक्रेसी तो है, फ्रीडम तो है ना। हम लोग भी बात, तो ओपिनियन रखना तो हमारा हक है ना, ये तो हमें ना जी, दबाया जाए प्लीज। एंड कमिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, आप हमारी ओपिनियन को तो थोड़ा सा अलाउ करें हम, कि हम अपनी ओपिनियन जो है वो रख सके जैसी भी हो। मैडम, कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन G20, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंडिया इज टॉकिंग ऑफ ग्लोबल साउथ। जो सेंट्रल चीज है, दैट इज क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। उधर चाइना भी ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है। हाउ कम इंडिया कैन टॉक ऑफ ग्लोबल साउथ, जबकि विद इन द ग्लोबल साउथ बहुत सारे लोगों का, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे प्रोफेसरों से मिलता हूँ तो बातें होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जो, फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज कि इंडिया का जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो पाकिस्तान है। उसके साथ तो मिसाइल अच्छे नहीं है इंडिया के। ठीक है, सो कभी वो हमें FATF में फंसा के रखने की कोशिश करते हैं, कभी जो है वो और किसी चीज में कहते हैं कि यार इनको जो है नहीं निकलने देना, इनके जो है ना वो अपना अपना पर्सनल एजेंडा सेटल करना है। आप समझते हैं कि एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात करना जी, कि ग्लोबल साउथ में जितने ममालिक आते हैं, अफ्रीका में, एशिया में, बाकी भी एशिया पैसिफिक में, उधर लैटिन अमेरिका में भी, सबकी बात करना चाहता है। लेकिन हाउ कम जो है वो इंडिया वो पाकिस्तान के साथ इतना जो टफ एनवायरनमेंट रखा हुआ है, और जैसे स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ग्लोबल साउथ की जब बात करनी पड़ेगी तो सबकी बात करनी पड़ेगी? फिर ये नहीं है कि आप एक मुल्क को निकाल दें, एक के ऊपर टफ लाइन लें, और फिर इसी तरह छोटे मोटे और जो मुल्क हैं, जैसे कभी बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। सो इंडिया को वो एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी फॉर टेकिंग दैट लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंडिया इज एट पार और इज ट्राइंग टू कम्पीट विद चाइना व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, और इसको पोलिटिसाइज करने में भी इंडिया ने अपना ज्यादा रोल प्ले किया हुआ है। सो आप इसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान के साथ टफ, लेकिन वैसे एजेंडा ग्लोबल साउथ का लिया है? पाकिस्तान ने कहा एनवायरनमेंट का मसला है, इंडिया बोले ही नहीं उसमें। तो इसमें भी जरा काइंडली थोड़ा सा एजुकेट करें।
देखिए, we look at Pakistan as a destruction, as a distraction. Sorry, destruction भी वो वैसे आपके दिल गलत की होता बात है साथ सामने साथ। आ गई कि जी जी जी। डिस्ट्रक्शन ही हो जाए इनकी तो है। डिस्ट्रक्टिव पावर भी कह सकते हैं वैसे, बट वी डू लुक एट पाकिस्तान एज अ डिस्ट्रैक्शन. We don't look at Pakistan as a player. You may not like my opinion, but I'm just trying to echo what we hear here in New Delhi. बिल्कुल सही। Uh, जी जी। उसके जो बहुत सारे जो उसकी वजूहात हैं, वो आई थिंक वो आपको अंदर झांकने की उसकी ज़रूरत है। कि अगर आपको अगर अफ़गान तालिबान जो एक टाइम पे आपकी इतनी बड़ी एलाइज़ थी, अगर वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो आई थिंक it's a bit hard on India on your part to expect the Indians to take you very seriously. ठीक है? You got to really put your house together. एंड पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये भी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब आप ये कहते हैं कि रीजन की बात करते हैं. आई मीन पाकिस्तान इज वन कंट्री विच literally stonewalled, you know, so many projects of SARC. लास्ट जब उनका समिट था वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने शर्त लगा दी कि जी आप तालिबान को बुलाएं और आप जो है मेक श्योर कि कोई भी जो अर्स्ट वाइल अफगान हुकूमत जो थी उसका कोई मेंबर वहाँ नहीं आना चाहिए. व्हेन यू डोंट हैव योर प्रायोरिटीज सॉर्टेड, I think the world is not going to sit and waste time on you. I think that realization has dawned upon India that this is a distraction. Leave them alone. We have issues with them, outstanding issues with them. We will solve them at our own discretion. Um, Talking about global south, I know India is you know, making efforts to be the emerging face of the global south, and the world is really buying that. You know, you cannot just say कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दुनिया ऐसा नहीं समझ रही है. uh, uh, See, one reason is also that the Chinese are so unilateral in their approach, and India as a country is very multilateral, and we believe कि जो हमारा जो खिता है, you know, there is so much world population which is living in this part of the world. तो हमारी जो representation है overall, जो अगर आप देखें वो इतनी अच्छी नहीं है. अगर आप देखें जो at the forums like the UN and UNSC, so of course we have our own vested interest, and we have big goals ahead. And आप ये भी देखें कि जब दुनिया पूरी जो है एनर्जी क्राइसिस से लड़ रही है, फूड क्राइसिस से लड़ रही है, इंडिया में ये दोनों क्राइसिस नहीं है. वी आर लिटरली द फूड क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड. And even as the chairperson of the G20, the chair of the G20, we have our priorities pretty sorted here. Uh, तो ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान को इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, सो प्लीज़ कम, बी आर गेस्ट, नो प्रॉब्लम. हमने आपने बात की इंडिया के कोई ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, या यू नो नेबर्स के साथ. तो आई कांट थिंक ऑफ वन कंट्री जिनके पाकिस्तान के साथ जो हैं ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें, इंडिया हैज़ बेटर रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दैन पाकिस्तान. We have invited the Bangladesh, you know, the Bangladeshis to the G20 summit as well. They are an invitee, and the world for a very long time has been ignoring Bangladesh as a very unimportant country. But you know, there are literally like 160 million people living there, and they are growing at a faster pace than India on so many parameters. So we take them very seriously, and we respect the fact that the Bangladeshis also kind of exercise their own strategic autonomy when it comes to so many things. But yes, the countries which are pretty much towing the line of the Beijing, and countries who have been trapped by the Chinese and they toward their agenda, we are better off without them, and we would not entertain them, you know, beyond a certain extent. बिल्कुल ठीक है। मेरा पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन मेरी जो जो डिस्कशन थी वो ये थी कि व्हेन यू गो फॉर एक ग्लोबल एजेंडा रखते हैं, देन यू हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर. आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है. एंड आई थिंक इफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि नहीं हमने पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करना है, आई थिंक इट वोंट अफेक्ट इवन इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी डिपेंडेंस नहीं है. अगर हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती, बॉर्डर खुले होते, तो और चीज होती. पता है कमर, आपको एक्चुअली सब मालूम है, बट आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी आपको वो बताए. You know, मैं the way you concluded, you pretty much know everything. What is wrong with your country, you know it better than anybody else. ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे पाकिस्तान का तो पता है ना क्या हो रहा है. थोड़ा बहुत मैं भी कुछ समझता रहता हूँ, इधर उधर ध्यान रखता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ों पे समझने की जी, बट कोशिश करता हमारी जो प्रायोरिटीज है वो बिल्कुल अलग है ना. अब ये भी तो होता है हूँ. ना, आपकी प्रायोरिटीज भी तो कहीं पे आके कुछ सिनर्जीज होनी चाहिए ना.
सही आपकी कह priorities बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ है. Right now we are trying to be, bridging that gap between the developed nations and the developing nations. We are projected to be having the fastest, GDP growth among all the G20 countries. तो ऑफ कोर्स our priorities are very different, and हमारे जो मसले भी हैं वो आपसे बिल्कुल अलग हैं. तो ठीक हर इंटरेस्ट अपना, हर नेशन अपना इंटरेस्ट देखता है ना. हमारे जब प्रॉब्लम्स ही बिल्कुल अलग हैं, आपके प्रॉब्लम्स बहुत ही अलग हैं. आपके प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आपका जो आर्मी चीफ है वो हाफिज़ कुरान है कि नहीं है. हमें नहीं, यहाँ पे ये बोल दिया पाकिस्तान का कि हमारा प्रॉब्लम आर्मी नहीं है। चीफ कौन है. ये नहीं, ये बट आप ये you ये are too, ये you आपकी too. ये No, आप no, 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 ये Kamar, कॉन्फ्लिक्ट hear me out. ये You कॉन्फ्लिक्ट kind of try to judge every situation based on religion. See, that's not how it works, right? नहीं 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 Religion is a आप part of इसको your life. It cannot be made into a foreign policy or your way of life. That's not how ये it works. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये क्योंकि आपकी आप अगर इंडिया सोच को बड़ा फॉलो करते हैं तो हम भी तो करते हैं ना थोड़ा अच्छी बहुत. तो बात हम छोटे मोटे एनालिस्ट हैं, बट है। थोड़ा बहुत तो हम भी फॉलो करते हैं ना. हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से, किस अप्रोच से चीजों को जज किया जाता है, कि आर्मी चीफ के लिए भी लोग किस तरह की चीजें एक आर्मी चीफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा जनरल हो वो मतलब टफ डिसीजंस ले सके, ही इज डिसाइसिव. हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनको किसी रिलीजन का नो हाउ है नहीं है. We would want them to understand, geostrategy better, because the world is so. Today, if you look at it, geostrategy, geopolitics, geoeconomics, everything is so intertwined. आप अगर सोचेंगे कि आप एक चीज को पकड़ के आगे चलते रहेंगे तो सॉरी, आई मीन द वर्ल्ड विल जस्ट मूव ऑन एंड यू विल स्टिल बी स्टैंडिंग राइट देयर. सही कह रही है, और मेरा चलें ख्याल पर ये है कि ट्रेडमिल पे ना चलें, बिकॉज कहीं नहीं पहुंचेंगे. नहीं नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पे अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं समझता हूँ कि जो सियासत है उसमें मज़हब की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. जी. सियासत को सियासत के लेंस से देखना चाहिए. पाकिस्तान में भी जारी बात है, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल मज़हब, क्योंकि पाकिस्तान मज़हब इस्लाम के नाम पे बना. सो इट विल ऑलवेज बी सेंट्रल. जो जो एक सिचुएशन है ये मेरे सियासत सारे में करें, आई एम सेइंग आर्मी में ना लाए ना, बिकॉज तो आर्मीज वो जॉब इज नॉट दैट. वो देखें, आर्मी भी तो मुसलमान ही है तो उसमें भी तो है कि जो भी चीजें आ रही हैं, सो लेट्स हैव इट द वे इट इज. मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी इसी तरह, या किसी और दुनिया में भी, बाकी मुल्कों का मैं नहीं, हमारे बात नहीं कर. है. आर्मी इज अ वेरी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन. दे कीप अवे फ्रॉम फालतू का रिलीजियस पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट. देव गॉट नथिंग टू डू विद इट. एंड चलो मतलब मेरे लिए मैं तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी एलियन है कि आर्मी भी मुसलमान है. मतलब हम यहाँ पे हमारी जो आर्मी वाले हैं उन्होंने गुरुद्वारे भी बनाए होते हैं, मंदिर भी बनाए होते हैं, उन्होंने कुरान शरीफ भी रखी होती है. सो वी कम फ्रॉम वेरी यहाँ पे डिफरेंट भी वर्ल्ड्स, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि मुसलमान आर्मी क्या होती है और हिंदू आर्मी क्या होती है. वी आर नॉट लिविंग इन द 6th century एनीमोर, आई थिंक.